Hey dear students, how are you all? Alright, so let's start our today's concept, today's topic. And the name of the topic is exactly बच्चों आज ना हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एसिड होता है, बेस होता है, वो सारी चीजें तो ठीक है, पर ये डाइबेसिक एसिड किसे बोला जाएगा, पॉलीबेसिक एसिड किसे बोला जाएगा, तो ये समझना है आज के कंसेप्ट में. ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज बच्चों मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करूँ. मान लो मैंने एक एसिड लिया HX. ओके, HX क्या है? HX है मेरा एक एसिड. ओके, अगर इसे मैंने पानी में डाला तो जैसे आप जानते हो, देखो कल से हम लोग यही चीजें पढ़ रहे हैं. ये आपको देगा बच्चों H प्लस एक्वस प्लस आपको देगा ये X माइनस एक्वस. ये चीज तो क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, एक आपको देगा बच्चों यहाँ पे H प्लस, दूसरा आपको देगा यहाँ पे X माइनस. अब एक कंसेप्ट आपको यहां पे समझना है. मानो इसके लिए Ka कैसे लिखते हैं? Ka आप लिखते हैं बच्चों के H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन अदर ब्रैकेट, X माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द डिनोमिनेटर, HX का मोलर कॉन्सेंट्रेशन. लिखते हैं कि नहीं लिखते हम लोग? चल ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत ही अच्छे. नाउ लिसन, K को क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं बच्चों एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब एक चीज ध्यान रखना, इफ Ka इज हाई, इफ Ka इज हाई, गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग. अगर बच्चों Ka का वैल्यू ज्यादा होगा तो आपका एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. ये चीज तो क्लियर है. यहां तक ठीक था. इसका लाइव एग्जांपल ले ले तो एक HCl लिखेंगे. अगर HCl को पानी में डाला तो आपको क्या देगा? वो आपको देगा बच्चों H प्लस प्लस Cl माइनस. देखो मैं जो समझा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखना, तभी जाके कंसेप्ट समझ में आएगा. तो इसके लिए Ka कैसे लिखते? Ka हम लिखते बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन द अदर ब्रैकेट, HCl का कॉन्सेंट्रेशन इन डिनोमिनेटर. अगर मैं आपसे बोलूं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक बात क्लियर होती है यहां से. क्या बात क्लियर होती है? अगर मैंने आपसे बोला कि आपका HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब कि आयोनाइजेशन ज्यादा हुआ होगा. मोल डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन कैसा हुआ होगा बच्चों? ज्यादा हुआ होगा. मतलब H प्लस कैसा मिला होगा? ज्यादा मिला होगा. Cl माइनस कितना मिला होगा? ज्यादा मिला होगा. अगर ये दोनों ज्यादा है तो न्यूमरेटर का वैल्यू कैसा आएगा? बड़ा आएगा. इससे डायरेक्ट शो होता है कि Ka का वैल्यू कैसा आएगा? हाई आएगा. Ka का वैल्यू ज्यादा आएगा. समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो ध्यान से. चलो यहां पे ठीक था. एक और एग्जांपल हम लेंगे बच्चों HNO3 वाला, मतलब के नाइट्रिक एसिड. ये होता है अच्छा खासा ऑक्सीजन. इसे भी आप आयोनाइज करके देख लो तो यही चीज होगी ना. क्या देगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस. ओके ठीक है. अब एक चीज यहां पे देखना, कि मैंने ये एग्जांपल लिया, यहां पर मेरा एसिड एक ही प्रोटॉन दे पा रहा था. ओनली वन प्रोटॉन कैन बी डोनेटेड. सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन डोनेट हो रहा था. अब देखो ध्यान से देखो, HNO3 में भी कितना प्रोटॉन डोनेट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन. ओनली वन प्रोटॉन कैन बी डोनेटेड. सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पे एक ही प्रोटॉन डोनेट हो रहा है. इसके लिए भी अगर आपने लिखा कि A का वैल्यू तो कैसे लिखोगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन. अब जैसे जानते हो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो Ka का वैल्यू कैसा आएगा? हाई आएगा. अगर Ka हाई है तो आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन हाई होगा. एंड उसके वाइस वर्सा में देखो तो HNO3 कम बचा होगा. ओके, HNO3 कम बचा तभी तो जाके ये ज्यादा मिला. सही है, मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ, ये 100 डाला तो ये 100 मिला, ये 100 मिला, तो 100% डिसोसिएट हो. ओके, अब ध्यान से देखना,
ये दोनों एग्जाम्पल में तो हमारे पास एसिड वैसा था जो एक ही H+ दे पाए। तो इस टाइप के एसिड्स को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के एसिड को बोला जाता है मोनोप्रोटिक एसिड्स। दे आर दी एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स, जो सिर्फ और सिर्फ कितना प्रोटॉन दे पाए? एक ही प्रोटॉन। समझ में आ गया? देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है केमिस्ट्री में, तो कुछ भी नहीं। बाकी कोई सब्जेक्ट ले लो तो कुछ डिफिकल्ट शायद मिलेगा, पर हमारे केमिस्ट्री में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब बनता है कि जो सिर्फ आपको क्या दे? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन। अब मेरे पास एक एग्जांपल है बच्चों, जिसे बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, वो है H2SO4, जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप इसे बोलोगे बच्चों इसे बोलोगे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑलराइट, अगर इसे लिया तो ध्यान से देखना। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर को देखने की। तो स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? प्रैक्टिस से। पहली बार आज देख रहे हो, बाकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ओके, एच को सेंटर में लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया, इसके साथ एक H दिया, एक ऑक्सीजन दिया, उसके पास एक H दिया। अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, वो ध्यान से देखना। ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब उसका आप मालूम है बच्चों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ा ही कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन के तुरंत बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। मतलब फ्लोरीन के तुरंत बाद ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल से ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है आफ्टर द फ्लोरीन कि जिसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद है बच्चों। उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, पूरे दिन उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके पास? एक तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब वो देखेगा ना कि कहां से आसानी से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये हाइड्रोजन तो बेचारा है, सही है, मतलब वो इतना पावरफुल नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा। ध्यान से देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये आपको कुछ इस तरह का स्पेसिस बना के देगा। OS डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस आएगा H प्लस। क्या रिलीज हुआ? प्रोटॉन। ये क्या बना? HSO4 माइनस। कितना प्रोटॉन रिलीज हुआ बच्चों? पहले तो एक प्रोटॉन रिलीज हुआ। अगर इसके केस में आपने Ka लिखा तो मैं लिखूंगा Ka1 इज इक्वल टू दी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इन अदर ब्रैकेट HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीसीज मिली, एक तो H प्लस वाली स्पीसीज मिली, एक दूसरी ये स्पीसीज मिली। इन डिनोमिनेटर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ध्यान से समझना है। अब आप ध्यान से देखो, जैसा हाइड्रोजन इस तरफ है बिल्कुल वैसा हाइड्रोजन इस तरफ भी है ना, तो जो चीज यहां पे हुई वो चीज यहां पर भी हो सकती थी, पॉसिबल है, तो चलो वो भी करवाएंगे। तो अब यही स्पीसीज से बच्चों होगा क्या? यही स्पीसीज से S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, इसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब ये वाला बॉन्डिंग पेयर शायद उसने इसके ऊपर खींच दिया, तब जाके क्या बनेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां से भी क्या रिलीज हुआ? एक प्रोटॉन, मतलब फिर से एक प्रोटॉन रिलीज हुआ। ये जो स्पीसीज बनी ना, ये कौन सी स्पीसीज है? SO4 2 माइनस, ये फर्स्ट माइनस, ये सेकंड माइनस। ये भी क्या रिलीज हुआ बच्चों? ये भी रिलीज हुआ प्रोटॉन, ये भी रिलीज हुआ प्रोटॉन। तो ये तो दूसरा रिएक्शन बना, इसके लिए मैंने Ka1 लिखा था, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? Ka2 लिखूंगा ना। दिमाग में जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। सो Ka2 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? SO4 रेज़ टू 2 माइनस इन अ ब्रैकेट H प्लस का कंसंट्रेशन इन अदर इन डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे बच्चों? H2 HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन। ओके, क्योंकि इससे बनाया था ना ये चीज। तो ये हुआ Ka1 एंड Ka2। अब प्रैक्टिकली बच्चों ऐसा मालूम हुआ है कि Ka2 का वैल्यू कम होता है Ka1 से। एक कहां से मालूम हुआ? फ्रॉम प्रैक्टिकल्स। तो इससे साबित क्या होगा? यहाँ पे दो प्रोटॉन मिला ना,
तो इसे बोलेंगे बच्चों डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड, यहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही है बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज याद रखना कि जो K1 होता है वो ज्यादा होता है, उससे K2 कम होता है, उससे K3 और कम होता है। ऐसा क्यों होता जाता है वो समझना है। K1 ज्यादा है, बड़ा है, मतलब कि ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 वाला एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। पर HSO4 वाला एसिड कैसा है? वीक एसिड है H2SO4 की कंपैरिजन। ओके, अब देखो यहां पे एक और चीज पॉसिबल हो सकती है बच्चों, यहां से H+ रिलीज हो रहा था तो वो H+ वापस भी आके ये चीज बना सकता था ना। मतलब ये वाली जो स्पीसीज है ना, इसे कई बार एम्फोप्रोटिक स्पीसीज भी बोला जाता है। एम्फोप्रोटिक स्पीसीज, ये हो गया हमारा जेई नीट वाला कंसेप्ट। कई सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे जो H+ रिलीज हो रहा था वो वापिस आके ये भी बना सकता था ना। मतलब HSO4 माइनस एक ऐसी स्पीसीज होती है जो H+ रिलीज भी कर पाएगी एंड गेन भी कर पाएगी। मतलब HSO4 माइनस एक ऐसी स्पीसीज है बच्चों जो एम्फोप्रोटिक स्पीसीज है, एंड H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड। अब मैं एक चीज क्लियर करवा दूं कि K1 कैसे बढ़ा, K2 कैसे कम हुआ। मतलब कि H2SO4 की बात करें, क्योंकि यहां पे H2SO4 एसिड आ रहा है, ये K1 बड़ा है, इसका वैल्यू हाई है, तो ये शो ये करता है बच्चों कि इसका प्रपोर्शन कम बचा, ये लोग ज्यादा मिले। अब इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका प्रपोर्शन ज्यादा बचा, इसका वैल्यू कम है। ओके, आप डायरेक्टली प्रैक्टिकली याद रखना, कोई भी एसिड उठा के देख लो, उसका K1 हाई रहता है, K2 कम होता है, K3 और कम होता है। मतलब पहले एक प्रोटॉन निकालना था, अब दूसरा एक प्रोटॉन निकालना है, जो ज्यादा डिफिकल्ट। तो मतलब एसिड अब कैसा रहेगा? वीक एसिड बनेगा। तीसरा प्रोटॉन निकालना है, मान लो ट्राइप्रोटिक एसिड दिया हो तो तीसरा प्रोटॉन निकालना है, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब डिसोसिएशन शायद ना भी हो पाए, तो एसिड कैसा बनेगा बच्चों? वीक एसिड बनेगा। इस तरह से आपको आज का कंसेप्ट समझना था। समझ में आ गया? देखो बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट एंड डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, तो वही आपको फोकस करना है। इसको कॉपी में लिखो, नोट्स में लिखो, एंड अच्छे से एक बार फिर से देख लो। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, डिफिकल्ट मत बनाना। ऑलराइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो। ओके, बाय बाय। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। We've already talked about how to write an equilibrium expression. So if we have some generic acid HA that donates a proton to H2O, H2O becomes H3O plus, and HA turns into the conjugate base, which is A minus. And so here's our equilibrium expression, and the ionization constant Ka for a weak acid, we already talked about the fact that it's going to be less than 1. So here we have three weak acids, so hydrofluoric acid, acetic acid, and methanol. And over here are the Ka values. So you can see that hydrofluoric acid has the largest Ka value. So even though they're all considered to be weak acids, right, 3.5 times 10 to the negative 4 is larger than 1.8 times 10 to the negative 5. So hydrofluoric acid is stronger than acetic acid, and acetic acid is stronger than methanol. But again, they're all considered to be weak acids relative to the stronger ones. So let's talk about pKa. So the pKa is defined as the negative log of the Ka. So if we wanted to find the pKa for methanol, all we have to do is take the Ka and take the negative log of it. So the pKa is equal to the negative log of 2.9 times 10 to the negative 16. So let's get out the calculator and let's do that. Negative log of 2.9 times 10 to the negative 16. And this gives us 15.54, right, when we round that. So the pKa of methanol, the pKa of methanol is equal to 15.54. So we could write in a pKa column right here, and for methanol, it's 15.54.
3.4. If you did the same calculation for acetic acid, you would get 4.74. And once again, if you did this for hydrofluoric acid, you would get 3.46. So as we go up on our table here, right, we're increasing in acid strength. So out of our 3 weak acids, hydrofluoric acid is the strongest, so it has the largest value for Ka, but notice it has the smallest value for the pKa, right? So the lower the value for pKa, the more acidic your acid. So 3.46 is lower than 4.74, and so hydrofluoric acid is more acidic than acetic acid. The problem asks us to calculate the pH of a 1 molar solution of vinegar, which is acetic acid in water. So let's start by writing our acid-base reaction. So we have acetic acid, so CH3COOH, plus water, and if acetic acid donates a proton to water, water would turn into H3O+, the hydronium ion, and we would also get the acetate anion, CH3COO-, the conjugate base to acetic acid. So before we get to this problem, let's just pretend that we're starting with 100 molecules of acetic acid. So 100 molecules of acetic acid here. And let's say none of them have reacted. So this is before any reaction has occurred, which means we don't have any of our products, right? We don't have any hydronium ions. We don't have any acetate anions. And acetic acid is a weak acid. If a strong acid would ionize 100%, so all 100 of those molecules pretty much would ionize. But since acetic acid is weak, let's pretend like only one of those acetic acid molecules donates a proton to water. So we're going to lose 1 molecule of acetic acid, and that's going to turn into the acetate anion. So if we lose 1 molecule of acetic acid, we gain 1 acetate anion. And therefore, if we protonate 1 molecule of water with that proton, right, we're going to gain 1 hydronium ion. So we would say that we would have 99 molecules of acetic acid, and then we have 1 hydronium ion, and we would have 1 acetate anion. So that's the kind of thinking that we're going to apply to concentration. So next, we're going to start with an initial concentration here, and we're starting with a 1 molar solution of acetic acid. So I can write here 1.00 as my initial concentration. And just like before, we're going to pretend like nothing has happened yet. So the concentration of hydronium is 0, and the concentration of the acetate anion is also 0. So next, we're going to write a C here for change. All right, and let's define X as the concentration of acetic acid that reacts. So if we have a concentration of acetic acid as being X, let me go ahead and I'll just write X here. That means we're going to lose a certain concentration of acetic acid, and therefore we're going to gain the same concentration of the acetate anion, and we're going to therefore gain the same concentration of the hydronium ion. So when everything comes to equilibrium, so our equilibrium concentrations would be 1 minus X for the concentration of acetic acid, and for the concentration of hydronium, we would have X. And for the concentration of acetate anion, we would also have X. So now let's write our equilibrium expression. So let's get a little more room down here. So our equilibrium expression, so Ka would be equal to concentration of hydronium ion, so the concentration of hydronium ion, times the concentration of acetate anion, right? And this is all over the concentration of acetic acid, and we leave water out. So all over the concentration of acetic acid here. All right, let's plug in what we know. So the equilibrium concentration of hydronium, that's X, right? So that's X. So let's go ahead and put that in here. So we can put X in for concentration of hydronium. And concentration of the acetate anion, that's also X, right? So that's the concentration of the acetate anion. So I put in an X here too. All over the concentration of acetic acid. At equilibrium, that's 1 minus X. So I put in here 1.00 minus X, and this is equal to the Ka for acetic acid.
All right, so we had that on our table above. So let's go back up here to the table that we talked about earlier. And here is the Ka for acetic acid, 1.8 times 10 to the negative 5. So we plug that in. We plug that in here. So let's plug in 1.8 times 10 to the negative 5. Now, at this point, you could solve for x, but you would need to use the quadratic formula. So let's make an assumption at this point, and we're going to assume that x, our concentration, is much, much smaller than 1 molar, because that makes our life easier for the math. Because if x is much, much smaller than 1 minus x is approximately the same thing as 1, right? Because if this is an extremely small number, subtracting it from 1 isn't going to do anything. Isn't going to do much of anything. So we're gonna make this assumption and say that 1 minus x is equal to 1. And that just makes our lives easier. So now we have 1.8 times 10 to the negative 5th is equal to x squared over 1. So all we have to do now is solve for x. So let's get out the calculator here, turn it on. So we just need to take the square root of 1.8 times 10 to the negative 5. And so we get 0.0042. All right, so let's go ahead and write that down here. So let's get some more room. And x is equal to 0.0042. And remember what x represents. X represents the concentration of hydronium ion, right? X here represents the concentration of hydronium ion at equilibrium. So this is equal to our concentration of hydronium ion. And now we can calculate the pH, which was the whole point of the problem, right? So let's calculate the pH of our solution. So the pH would be equal to the negative log of the concentration of hydronium, so the negative log of 0.0042, and we can use our calculator for that. So let's go ahead and take the negative log of 0.0042, and that's going to give us a pH of 2.38. So let me go ahead and write that. So our pH is 2.38. So that is the pH of our vinegar solution.